Hello, good evening, Namaskar, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. This is Dr. Adnan, and we are on AMBL India Sunday webinar. So nice to see you all joining in. And can anyone tell me, am I audible? Yeah, doctor, you are audible. Okay, thank you so much. And I can see a lot of faces joining in. It's so great. So today we have what do you call a special webinar, I should say. I think first of its kind in India we are running like that, and that is all about the distant healing. Okay, because even in the previous one of our webinars, somebody was asking me like, "Sir, can we use Amwand for distant healing?" Because distant healing, you know that many people are interested in, and especially after the breakout of COVID, and especially during the breakout of COVID, I have had lots of chances to do healing because the physical healing was not possible that time. So I took an advantage, and I was healing. I was sitting down in Philippines that time, and I was having clients all across the globe, especially from US, from Australia, UK, and all these. So today we will talk about थोड़ा सा अपना साइंस के बारे में, जो डिस्टेंट हीलिंग का, एएफटी डिस्टेंट हीलिंग का, उसका जो सेकंड हाफ में जो है, we will witness or participate in a distant healing session, So let us enjoy also what is distant healing, Not the full way, of course, full way will take longer, I mean, the period. So we will experience थोड़ा सा जो है आधा घंटा जो है हम एक्सपीरियंस करेंगे व्हाट इज डिस्टेंट हीलिंग, खास करके जो क्लेंजिंग, बैलेंसिंग एंड सम सॉर्ट ऑफ एन एम्पावरमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डे टू डे लाइफ. एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ लोगों को जो है कोई भी दिक्कत हो, दे कैन ऑल्सो, जो जो भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हो, दे कैन ऑल्सो यूज द सेम एनर्जी व्हाट दे रिसीव to attend to those areas. That's not a problem. Okay. यहाँ पे एक चीज अभी आपको मालूम पड़ा होगा, खास करके जो काफी वेबिनार आप लोग अटेंड कर रहे हैं, Amwell is not just a company selling some quantum healing tools or supplements. It's not just a company. In fact, we are more than that, much more than that. Okay, because we have our own approach, a vision, a mission called energetic wellness, especially to bring the self-care evolution. And we believe that, no one in the world is supposed to be sick or unhealthy. It is basically, it's our birthright to be healthy and, in a wellness position. ये जो क्वांटम अप्रोच है, क्वांटम हीलिंग अप्रोच ऑफ Amwell, of course, to a certain extent, we are so happy that we are able to get that. And we have got lots of testimonials and proofs with us and how they are getting better and better, in many of the cases, not only the physical issues, but also many other areas of problems. तो यहाँ पे ये Amwell में जो है, we have an academy which is AFT Academy. It's like an academy of fractal science. यहाँ पे we impart the education, AFT quantum energy healing, उनका जो 10 steps protocol है, उनका जो special healing tools वगैरह है, तो these are all part of the AFT quantum energy healing. तो उसके बारे में एक academy भी है, and we educate the people. So it's very important. It is not just selling the product alone, but we educate the people also how to do it. So that is one part, and this Amwell is a parent. I mean, the Omega Global is the parent company of Amwell,
And we have been in this part of world for almost 2 decades. And in India, we have a wonderful office. So you can always contact our customer service with regards to learning about the product, or with regards to even कोई product अगर लेना है, you can always contact our customer service. Okay. And we, of course, keep conducting a lot of webinars, a lot of training programs, so that, we want to, we want to inculcate a sort of, what do you call, a feeling, a knowledge in the people, energy is everything. If you are able to manage your energy, if you are able to, you're bubbling with energy, and especially that energy is cleansed and balanced, your body is just asking for energy. That's all. Your body has an innate intelligence to come back to the position we call the optimum position, or the homeostasis, provided we have the right amount of energy to that. Okay. So ideally, as I said, we should never get sick. Sickness, we always say, is just, an incredible teacher. Sickness is just an incredible teacher who teaches us that there is something, some problem in our energetic state. That is the reason we are going, or we are getting sick. Maybe our energetic quantum is not cleansed, balanced, or aligned. Okay, including all the rest of the physical, mental, the emotional quantum as well. So to bring back that alignment and balance, we should, of course, we can use quantum tools, especially the M-Wand, which is a very, very powerful tool. We call it as an active healing tool, or it's a multi-purpose healing tool. And today I will show you how we can use the M-Wand also for distant healing. Sometimes what happens, like maybe your children are somewhere away from the house, maybe they are in America, settled down, and there's a phone call, Papa or Mama, I'm sick, I'm this, I'm that, whatever it is. Of course, you have that connection with your own sister, with your own children, or whatever it is, sitting at the comfort of your room, and they are also sitting in their room. You just call them on a video call, and with your intentions, you can do the healing. Okay, this is what I'm also going to do. Of course, to give you more empowerment, I'll be using a little bit of, hypnotherapy or NLP and all this. That is another part. So let me talk about जो है थोड़ा सा जो प्रिपरेशन के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि जो डिस्टेंट हीलिंग सेशन में नॉर्मली वी गिव दी लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा जो ब्रीथिंग काउंट अप एंड ब्रीथिंग काउंट डाउन का वो एक स्टेप है. वहां पे थोड़ा सा अपना बॉडी जो भी सी व्हेनेवर यू आर टेकिंग द एनर्जी आल्सो एट द सेम टाइम देयर इज अ टेंडेंसी, स्पेशली जो है ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेंगे तो हमारा बॉडी थोड़ा सा जो है डिहाइड्रेट होने जाएंगे. तो इसलिए थोड़ा सा पानी पी ले, पानी साथ रखें आप, ठीक है. और अपना जो स्लीपर्स है, जो जूते हैं, वो रिमूव करें, धरती पे या फ्लोर पे जो है अपना नंगे पाँव रखें. और खास करके अगर जहां आप बैठे हो, आप कोशिश करें जो है आप एक साइलेंस, या जो है रूम में ज्यादा कोई आवाज नहीं है, या कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, या कोई दूसरा मतलब म्यूजिक या पावर ऐसा कुछ नहीं. तो जब आप मुझे सुनते रहेंगे, बिकॉज आई विल बी डूइंग द वॉन्डिंग हियर विद अ फोकस्ड इंटेंशन एंड विजुअलाइजेशन. सो यहाँ पे यू आर जस्ट सिटिंग एंड रिसीविंग. सो ड्यूरिंग जो प्रोसेस होती है, यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट in a receiving mode, that you are receiving the energy, that's it. Okay, and you are listening to me. मुझे जो है खाली सुन रहे हो, and you can keep your eyes closed. आपका आंख भी जो है बंद करके रख सकते हैं, ठीक है. तो when I ask you after the session, after the whole bonding session, I will ask you, okay, now you can open your eyes. Then you can open the eyes. Okay, so in that case, what I do, like I will bring you down to the theta state of healing. So I will be using some
some specific what do you call background music. Okay. And a process जो है एक breathing countdown का process भी मैं आपको दूंगा ताकि जो है ना you can go to that healing level of the theta state of healing so that you can receive the energy much better. Okay, then when I finish the wanding, of course I need to give you a breathing count up. Okay, this is just to bring back to your conscious level of excitement. Okay, so preferably you can during the session, preferably you can keep your camera on because at least I can see you when I do the wanding. Otherwise, also it's okay. It's not a mandatory thing. If you are comfortable, only you keep your camera on. Otherwise, no problem. Okay. And especially like when you do the distant healing, it is always especially individual. Now this is a group healing, but when you do जो individual healing जब आप करेंगे, खास करने के लिए कह सकते हैं कम से कम उनका जो एक पिक्चर आपके सामने होना बहुत है. Because you can focus and intention, visualization, like which chakra you are cleansing and balancing, all these things can happen very well. ठीक है. तो अगर इसका थोड़ा सा जो साइंस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो हमें मालूम है सारे के सारे जो एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज हो, and most of them nowadays they are using the distant healing method also, even the pranic healing and all we know better. तो अगर ऐसा देखेंगे तो जो है ना इवन ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस में भी और इवन कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में भी जो है हमें पाया जाता है कि जो है डिस्टेंट हीलिंग ऐसा है. Even when you bless somebody also, it's a kind of distant healing, especially if the person is not around. Okay, so it basically involves a healing practice with the healing, directing the healing intentions, energy or prayer towards an individual who is not physically present. That is the basic thing about the distant healing. Okay, so कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि that means the nature of consciousness is involved. Yes, we call interconnectedness. Okay, which is like especially in the case of the transfer of healing energy across the distance. Yes, interconnectedness is the main thing. And in quantum physics also there are certain rules which have been which they apply to prove the effectiveness of quantum healing and things like that. Okay, so as an AFT healing facilitator and the master consultant, I have witnessed profound impact it can have on individuals. काफी लोगों के ऊपर जो है ना काफी अच्छे तजुर्बा या नतीजा मैंने देखा है. Okay, and it basically involves the channeling of healing energy from the facilitator to an individual, regardless of the location, wherever they are. And this energy often described as universal life force energy, or chi, or ki, whatever we call it. Okay, this will help to restore the balance and promote well-being and facilitate healing on various levels of physical, mental, and emotional. Okay, आपने सुने होंगे, आपने मतलब रिमोट हीलिंग के बारे में काफी लोग सुने होंगे, खास करके इंडिया में. ठीक है, तो ये जो आइडिया जो है ना, the idea of receiving healing from a distance, sometimes it might sound unconventional, yeah, too good to be true. However, let's consider the principles behind distant healing, especially what the quantum physics talk about, the whatever happening at the subatomic level or at the quantum level. Everything is interconnected. Energy is it's not bound by time and space, and this form the foundation of distant healing practices. Some basic pillars of quantum medicine when we talk about. If this quantum doctor, there's a wonderful book written by Dr. Amit Goswami.
he talk about, there are certain basic pillars like downward causation, non-locality, tangled hierarchy. These are the basic theory he talked about. In that, the non-locality is the theory. He is a theoretical physicist. In that, the non-locality is something which is very important, which is playing a very vital role जो है यहाँ पे जो distant healing, because this also we call it like a non-local healing. It is distant healing, remote healing, intention therapy, non-local healing, all same. ठीक है, these are all same. So, and we call also, we sometimes, the signalless communication. This is where normally the non-local that theory जो है predict कर रहे हैं. So we can do this in the personalized form also. मतलब अलग किसी एक को अगर जो है healing करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. And this will, of course, help their living, what do you call the wellness, everything, much, much better. एंड स्पेशली अगर किसी एक इंसान को अगर जो है आप हीलिंग करेंगे, कुछ ऐसा स्टेप्स आप फॉलो करने का भी जरूरत है. वो सारे के सारे जो हैं हमारा जो AFT क्वांटम एनर्जी हीलिंग का जो कोर्स जिन्होंने किए हैं, मतलब उनके पास सारे के सारे टूल्स वगैरह हैं, वो तो जो है ऑटोमेटिकली he will learn also. So it will be very easy. Even some people I know around the world, they conduct the distant healing sitting at home, and they are very good at it, how to heal the people. So, there are certain methods like you need to understand whatever the problem they have, and you need to do the body and mind sync. There is an intention setting. There are certain procedures. Once you follow that religiously, you can really help an individual, because of course, जब वो एक personalized healing बनती है तो जो है you are concentrating on a single person, attending each and every problem. Initially, you are listening also a lot from him. Okay, so you create a sort of, a symbiotic relationship. So that also helps a lot in health and healing. It is not that जैसा कि आप किसी को हील करेंगे तो वो ही हील करता है, नहीं, वो ही हीलिंग होती है, नहीं. Even जो हीलर है वो भी हील होता है. That is the beauty about the quantum healing. So when you heal somebody, you also will get healed. Okay. And especially our AFT Academy, this is backed up by AHHA, which is American Holistic Health Association. They are a wonderful organization. All the, the integrative medicine or holistic medicine, wo sare ke sare jo body jahan, they're giving even a lot of certification and membership and all these. Okay. So, अगर मैं अपना खुद का कुछ अगर एक्सपीरियंस मैं अगर शेयर करूंगा तो जो है एज ए फैसिलिटेटर, एज अ प्रैक्टिशनर, इतना बढ़िया जो एक्सपीरियंस, इवन यू कैन फाइंड लॉट ऑफ जो है टेस्टिमोनियल्स, इवन यू कैन फाइंड इन माय साइट और इन आवर YouTube channel also. A lot of people, they have gone through the AFT quantum healing and remarkable transformation they have found. Not only for their physical problem, even mental, emotional issues also. Okay, so that's all. Now let us talk about the process. Okay, आज का जो process first जो है, anyhow, since it is not an individual or a personalized healing, what you need to do, you know what are your problems. Like for example, कोई भी problem हो, चाहे वो कोई pain हो सकती है या जो भी problem हो, you just imagine. Okay, you just imagine, you can just bring it in your mind. Okay, I have this problem, this problem, this problem. I just need to attend. So I just need an amount energy चाहिए मुझे बस. So you can just concentrate on that. So during the healing time, I will guide you through a relaxation process. Okay, creating a space for the energy to flow, and through focused intention and visualization, I will channel the healing energy to you by using AFT quantum tool, which is M1. The 0 point resonance of this tool, the vortex created by this tool, with the focused intention, it will help heal and to be healed. And who is doing the magic?
the intelligence of your energy system, your pristine blueprint, your subtle organizing energy field is doing the magic. And this is working with the principle we call the quantum entanglement. Or you must have heard of, the butterfly effect and all these, because whatever happening at the quantum field, don't think that it is not, going to create a ripple effect anywhere out in the world. This is where even the quantum entanglement, ये जो theory है फिजिक्स का, जिसमें कहता है कि इवन मतलब कोई भी इवन कितना भी डिस्टेंस में हो, ओके, नॉर्मली जो फिजिक्स में पहले हुआ करता था, देयर इज देयर इज लिमिटेशन, स्पीड का एक लिमिटेशन होती है, जैसा कि स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का लिमिटेशन वो भी अभी दूर दूर की बात है, बिकॉज इट इज ऑल्सो लाइक द जो जो नया साइंटिस्ट जो है ये सब, देयर इज नथिंग कॉल्ड जो स्पीड ऑफ लाइट है, बिकॉज द क्वांटम एंटेंगलमेंट जो एक चीज है, वो इवन अल्फा सेंचुरी में, इवन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम जो लगता है जहां पहुंचने के लिए, वहां तक भी इंस्टेंटेनियस जो है पहुंचता है। दिस इज व्हाट ऑल टॉक अबाउट द क्वांटम एंटेंगलमेंट। ओके, so during the session, of course, as I told you, I will be only talking, you are just listening to me. Okay, when I ask you to open the eyes only, you can open and you can talk. If you want to talk, you can just even press the hand icon and you can share whatever the experience you go through. All right. So maybe, some people have described, like, they have a sensation, जो है कुछ warmth या tingling or a profound sense of peace during and after the session. Some people have it. It's a gentle yet potent, what do you call it, experience that works holistically. So let us start the program. Let us start the healing program. So as I said, sit comfortably. Okay. Like in a receiving mode, even you can keep your hand, like this, palm open, so it will be good. All right. And you can close down the eyes during the session. Okay. So I'll be putting a simple healing music. Take a deep breath in. एक गहरी सांस ले लें और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। When you breathe in through your nostrils. When you breathe out from your mouth, so that you can keep your mouth slightly open. थोड़ा सा अपना मुंह खोल रख सकते हैं, ताकि जब आप ब्रीथ इन करेंगे अपना नाक से करेंगे, जब ब्रीथ आउट करेंगे अपना मुंह से, और डीप एंड डीप एंड डीप। Take a deep breath in. Breathe out. Relax. Relax. Now concentrate on your chest and focus on your breathing. Take a deep breath in. Breathe out. Now I will count
counting down 6 to 1. When I count down, let the breathing go deeper and deeper and slower and slower. 6. Breathe in. Breathe out. Now you are sourcing the energy from the cosmic when you breathe in. When you breathe out, feel that you let go all stress. Let go all pains. Let go all frustrations. Let go all grievances. Let go all tension. 5. Breathe in. Breathe out. 4. Breathe in. Breathe out. 3. Breathe in. Breathe out. 2. Breathe in. Breathe out. 1. Breathe in. Breathe out. Relax. 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 Now I'm wanting all your 7 energies from crown to the root, one by one. Relax and feel the energy. Imagine a white, bright light coming above your head, and slowly that white, bright light coming down and down and down, touching all your 7 chakras, revitalizing you, energizing you.
removing all the problems, whatever you have, whether it is pain, discomfort, and improving each and every cells in your body. Improving your cognitive powers, the mental powers, the healing powers, the immune system. And improving your personality, attraction, and manifestation skill. Take a deep breath in. Breathe out. Now tell yourself in your mind's voice, I'm getting better and better. I'm getting better and better. I'm getting energized and energized. I'm getting healthier and healthier. I'm positive and positive. I am blessed. I am blessed. Take a deep breath in. Breathe out. I believe you feel much stronger and more confident about yourself. Concentrate on the areas where you have concern. Take a deep breath in. Breathe out. Now you will be guided with some very powerful affirmations. At the end of every affirmation, confirm with yes in your mind's voice. Yes, I am. Yes, I am. And visualize being that person as in the affirmation. You are focused on your breathing and grounding. You feel radiant and full of abundant energy and health. You are driving from your inner strength and inner light. Your trust, your inner light, and intuitions to guide you. You deeply fulfilled with who you are. You strongly trust and believe in yourself. You
You love yourself and approve of yourself. You are confident, courageous, and secure. You love and honor yourself. You are motivated and passionate about your life. You are active, energetic, and full of zest. You radiate love and happiness every moment. You have the power to heal and rejuvenate every single cells in your body. You are now sourcing energy from the universe. The energy is healing every cells and vitalizing you. You have the genetic potential of a genius to achieve anything in life. You have the power, heart, and mind of great leaders. You are connected to the infinite intelligence of the universe. You have the power to create and overcome any challenges in life. You know that all situations will work out for your highest good. Anything and everything is possible. You are a very successful and wealthy individual. You are a wealth magnet. You are a people's magnet. You are a success magnet. You are an abundance attractor. Wealth and happiness are pouring into your life in abundance. Take a deep breath in. Yes, you are feeling great and wonderful. Stay in this state and imagine your future coming true. Visualize with every senses that you are achieving all your goals and desires. Imagine yourself living it. Picture it bright, colorful, as vivid as possible. And feel it in all your senses.
This is you. This is your life. Your friends and families loves, admires, and adores you. You're feeling grateful for being born as such a wonderful person. Every moment you will be this person and enjoy the bliss and joy out of life. Yes. Yes. You are rejuvenated and full of energy. You are expanded to a higher level. You are now ready to live your day with the power you possess. Now, in the count of 1 to 6, you are going to rise from your inner senses to your conscious level of excitement. Take a deep breath in. Breathe out. 1. Up and up. 2. Up and up. 3. Up and up. Start feeling the breathing in your body. 4. Up and up. Feel the blood flowing through your body. 5. Up and up. Your body is charged with excitement. 6. Up and up. Now slowly you can open your eyes. Okay, so this is a simple healing, I should say. I was focusing on cleansing, balancing, and giving some kind of an empowerment. So you need to drink a lot of water today. Don't go for any party and all, because whatever the energy you possess now, आपको जितना energy मिला है वो आप रखिए, और even movement also go a little bit slow and let that energy जो है आपको heal करें, जो भी problem है जो है heal करें. This is very important. And कोई अगर question है तो जो है you are most welcome. Any question? गुड इवनिंग सर. Very good evening. सर मेरा एक्चुअली एक क्वेश्चन है. वैसे तो ये बहुत अच्छा लगा जो अभी आपने कराया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. सर मैं एमएड यूज कर रहा हूँ,
और Okay. वैसे सडनली अभी लास्ट 1 or 2 days बिफोर आई हैव मेरे को तो ब्लड बीपी का हाई बीपी का एकदम प्रॉब्लम हुआ। Okay. तो सडनली मतलब फर्स्ट टाइम था मेरे साथ, कभी नहीं हुआ ये। Okay. तो जस्ट अब लास्ट 2 days से तो मैं तो अब इसको प्रिकॉशंस तो रख रहा हूँ। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, जैसे मैं एमवेड यूज कर रहा हूँ तो क्या एमवेड इस पीपी में भी जो कि मेरे लास्ट 3-4 days मेरे चेस्ट में बैक पेन भी हो रहा था। तो Okay. मैं ये जानना चाह रहा हूँ एमवेड क्या मेरा इस बीपी में और इस पेन में मेरे को इसमें सपोर्ट करेगा? जी, बीपी में खास करके, क्योंकि देखिए जब आप एमबॉन्ड यूज करेंगे तो उस दौरान जो है आप अपना जो जो ब्रीथिंग पैटर्न है उस पे भी थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि जो नॉर्मली जो बीपी हो, इवन जो हार्ट बीट जो भी है, ये सारे जो है ना इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से भी जो है कंट्रोल होती है। तो थोड़ा सा आप क्या करना, जब वांटिंग करेंगे तो बैठ के इत्मीनान से बैठ के आराम से टेक ए डीप ब्रीथिंग एंड ब्रीथ आउट। वो ब्रीथिंग प्रोसेस जैसा कि योगा में होता है ना, जी जी योगा में नॉर्मली जो स्टैंसेस होती है उससे भी इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग नहीं है तो योगा नहीं होता। जी तो सर। इसलिए जो है वो एम्बॉन्डिंग प्रोसेस में जो है यू नीड टू कंट्रोल, तो कि एक एक किस्म का एक कोहेरेंस आ जाए। उस कोहेरेंस में द ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो भी टू ए सर्टेन एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं अपना हार्ट बीट्स और हार्ट एक्टिविटीज जो भी है। ठीक है, इट विल ब्रिंग डाउन टू द नॉर्मल स्टेट। राइट। तो ये आप जरा गौर करें। ठीक है, ठीक सर। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीथिंग एंड डू द वांडिंग। इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से बैठ के करें। इट विल 100% ब्रिंग डाउन योर बीपी एंड देयर विल बी ए स्टेट इवन वो जो है ना, यू विल नॉट बी हैविंग दैट प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक राइट है, सर। राइट राइट या तो यू राइट। कैन डू द एम बॉन्डिंग। इट्स एन एक्टिव एम बॉन्डिंग इज एन एक्टिव मेडिटेशन, जी राइट। वी कॉल इवन a mindful meditation also. Yeah, it's very powerful. So you can राइट। you can use that amount and उसके तो उसके लिए जो है ना हार्ट फील्ड में जो है आप ये करें। और क्लेंजिंग जब एनर्जेटिक लेवल से आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक राइट है, सर। राइट। और जो भी नेगेटिव सिग्नेचर्स हैं, ठीक जी। है, वो सब निकल भी जाएंगे। तो इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो You're मच। most welcome. Yeah. Any other question you have? So thank you, in fact, for considering the transformative potential of distant healing. So any questions regarding our Doctor, I session? have a Of course, question to now my some. WhatsApp. Okay. Uh, can we do the manifestations and distance healing for other people? Like healing husband through healing wife? That was an interesting Okay. question. Okay. And it's an interesting question. In fact, I was thinking like, why didn't this question came? I mean, in our abundance program, in our manifestation program. Manifestation. Yes, yes. या इनफैक्ट जो है ना, सी जब भी हम मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, इफ आई एम लाइक फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है इज ए चेन स्मोकर, वाइफ डजंट लाइक, वाइफ को बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हस्बैंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वाइफ आस्क somebody else to heal the husband doesn't know. So technically, it's like, either she's manifesting. If she is manifesting directly, yes, to a certain extent, it can happen. But if a third party is like, doing it, यहाँ पे क्या होता है ना, because there is another जीवात्मा in between. Because normally, now, right now, अभी आशीष जी से जो है, I'm directly connected. इंदर कुमार जी से भी मैं, I'm directly connected. So it's easy. Okay, there is no Jivatma in between. But if there is another, if you're doing it like, for example, आपका जो हस्बैंड का जो भी मतलब जो हैबिट है, अगर मैं जो है ऐसा निकालना है या कोई भी है, that he himself has to do it. Or at least the person who is with them
there should not be, like a mediator नहीं होना चाहिए. Then it will work. But at the same time, अभी recently मुझे जो है ना एक रिक्वेस्ट आया था कि एक दो बच्चे पैदा हुए हैं जुड़वा, और उनका हेल्थ सही नहीं था, और उनका फोटो भी पास नहीं है, तो कैसे हीलिंग करें एज अ थर्ड पर्सन. यहाँ पे अलग चीज है, बिकॉज देर इज अ कनेक्शन, बच्चे और माँ के बीच में कनेक्शन होते हैं. सो इवन इफ यू हील द मदर, इट विल गो टू, बिकॉज बच्चे जो है ना, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द मदर एनी हाउ. ओके, सो even emotionally, everything, there is a physically, there is a connection, so you can heal the mother, and through mother, the children or the small children, they can get the energy. So that way it is possible. Okay, so I hope you understood the answer. Yeah, sure. There's So another if there is question a from Abbas. Jivatma in between, it is difficult. Okay, it's a totally a different identity, Jivatma in between. Okay, so it is better direct. Okay, all right. There's another question, like, can we chant mantras and do wanting? Yes, we can. See, basically, mantras are like, especially in the Vedic system or in the Tantric system, mantra has a lot of powers, especially chanting mantras. It is nothing but a vibrational energy. Mantra is just a vibration. Even Om, it has got a vibration. Every mantra, even the Bij mantra, it's getting popular nowadays. The Bij mantra, which is like an abbreviated form of major Vedic mantras and all, that has also got an effect because you are resonating with it. So when you are chanting mantras, you can use Amwand, and it is very good. Like, even during the meditation also, we are using Amwand. So even during chanting mantras also, you can do, wanding. Okay, so it will be much better because it will help your energy level also, because it will resonate more. It's good. Because that is why, normally what we do when we go for any kind of good activity, like if somebody is going for namaz, of course they have to take the ablution, wuzu karna padega. If somebody is going for any other wo tirth, matlab jo bhi hai wo, they need to get, make their body shower. In fact, what exact body we need to take shower is not just physical body, hamara energy body ko wo sahi karna hai, because our major quantum is lying down in the energy body. So isliye do the wanding and do the chanting or mantra, whatever it is, very effective, very effective. मैंने देखा है काफी, even Buddhists भी जो हैं, even in Singapore, I have seen how they are using. There's another Okay. question. Can we use Omkara while doing unbonding without mantra? Mantras or positive affirmations. Can. Even normally the people, when they do meditation also, they use Omkara. Okay, because when they do the Omkara, automatically your vibration goes high. It will increase your vibration. So that way it will help. And my favorite, mantra is Gayatri mantra. Okay, in every spiritual or in every theological scriptures, आप जो है, you can find a lot of mantras or prayers, and especially this Gayatri mantra is very powerful. And I would suggest even the children, the school going children and all, what they should do morning, make it a regime, must. Morning, after taking shower, prayer, before going to school, just take the Amwand, and do the Gayatri mantra, like Om Bhur Bhuvaswa Yatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya. This will increase the knowledge, the divine knowledge, the wisdom. It will open up the mental abilities, especially the powers, the memory and all these things. So it is very good for the children. And similar prayers are there in other scriptures also, like even Rabbi Zidni Ilma. That is also a wonderful, because wisdom and ilm, the knowledge is very important. So you can always pray for it. So you can, and that's my suggestion, my personal suggestion. Okay. Yeah, And I think Radhika ji has some question also, right?
गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड सर इवनिंग राधिका जी। सर हमें ये पूछना था कि आपने एक बार राजयोग का जिक्र किया था, तो क्या आप राजयोगी हैं? दूसरा हमें ये जानना था कि जो एम वाटर है उसको स्टोर किसमें करना चाहिए अगर हम स्टोर करना चाहें तो। तीसरा ये था कि आपने जो एम बॉन्डिंग का ये बताया, तो बिजनेस और मनी को बढ़ाने के लिए इसको कैसे यूज कर सकते सी आपका तो जो है 3-4 क्वेश्चन एक साथ है, तो जो हैं? सर याद फिर आते हमें हैं मैं म्यूट पहले म्यूट कर दिया जाता है ना, इसलिए हमने तीनों एक साथ पूछ लिए। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। पहला जो आपका जो पहला क्वेश्चन जो है ना, जो राजयोगा का, आई हैव लर्नड अबाउट इट बिकॉज इन दुबई देयर इज a place where they train the people, and lots of my friends also, they go, they do it. Of course, I was not fully involved in that, organization or whoever that, but I like meditation. I take part in all kinds of, yoga, sahaja yoga, raja yoga, all these kind of things, and in Singapore also. So I have my own, I created my own meditation. I do in my own way. Even I use the Muse too. You can see in the that is just this one also. I use Muse too. It is a wonderful tool also. Like so I always explore all the areas, and even prayer is also a kind of meditation for the spiritual people. Spiritual people, we call, they don't pray, but they meditate. Okay. So that is my first answer. And the second answer, whether Amwant can be used for manifestation. Of course, yes, this is what we were talking about, we can always whatever you want. Even just now, what incantation, what जो affirmation मैं आपको दे रहा था, उसमें भी जो है, you are a wealth magnet, you are a people's magnet. Okay, so यहाँ पे भी जो है, there is a kind of affirmation and incantation जो है वो है. तो विजुअलाइज करें, you just do the wanting. Visualization is a very powerful tool. आप विजुअलाइजेशन कीजिए, काफी आपको जो गाइडेंस, काफी अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे विजुअलाइजेशन का, और ऊपर से आप एम्बॉन्ड यूज करें, हो जाएगा. इट विल बी वेरी सर तो वेरी इसमें काउंटिंग, आप काउंटिंग कर रहे थे या बस करते जाना है? देखिए, वो अभी अगर आप दूसरे को गाइड करेंगे, तब जो है आप काउंट, पहला जो है काउंट डाउन इसलिए आप कर रहे हो, ताकि उनको जो है एक तीटा लेवल ऑफ, जो ना गामा तीटा डेल्टा, वो एक लेवल होती है, उसमें जो तीटा लेवल जो है ना, वो हीलिंग लेवल होती है. तो तीटा लेवल पे लाने के लिए इट इज वेरी गुड बाय कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग. ब्रीथिंग जो है ना, वो एक किस्म का, मैं क्या कहूं कि वरदान भगवान ने जो दिया है कि स्वामी रामा, इन्होंने लिखा है द साइंस ऑफ ब्रीथ. जो है, अगर ब्रीथिंग के बारे में आप जरा सा इवन सिंपल कॉमन लॉजिक से भी अगर सोचेंगे कि कछुआ, द टॉर्टोइज, वो जो है 1 मिनट में शायद मेरे ख्याल में 3 या 4 या 5 सांस लेता है. ओके. और जो कुत्ता है, कुत्ता तो जो है, दैट ऑलवेज, वो इतना फास्ट जो ब्रीथिंग करता है, इतना फास्ट ब्रीथिंग करता है. एक बात आप देखें, कुत्ते का जिंदगी कितना है मालूम है? मैक्सिमम मैक्सिमम 13 साल, 11 साल से 13 साल है कुत्ता का लाइफ. लेकिन कछुआ का लाइफ जो है ना, 3 साल, 300 साल भी हो सकते हैं. तो इसीलिए जो ब्रीथिंग में जो है ना, वो थोड़ा सा जो रिलेशन है अपना लाइफ के ऊपर. तो इसलिए सारे योगीज जो है ना, वो ब्रीथिंग पैटर्न में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. जितना जो 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 ब्रीथिंग जो है ना, वो चेस्ट से नहीं करते, वो जो है ना अपना डायफ्राम से ब्रीथिंग करना चाहिए. डायफ्राम से ब्रीथिंग करके, और नॉर्मली ज्यादा ब्रीथिंग छोड़ना है, कम लेना है, ऐसे भी करते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है उसका. इवन टैक्टिकल ब्रीथिंग हम जो करते हैं, उसको टैक्टिकल ब्रीथिंग बोलते हैं. तो ये जो टैक्टिकल ब्रीथिंग है, मतलब नाक से लेके मुंह से छोड़ना आहिस्ता, मतलब टिल द लास्ट ड्रॉप, आहिस्ता ऐसे छोड़ के आप कोई भी मतलब जो करेंगे, तो उसके उसमें क्या है ना, यू विल गो डाउन, स्पेशली यू आर टेकिंग द डीप एंड स्लो स्लो पेस में जब करेंगे, तो योर बॉडी विल रिलैक्स. रिलैक्स करके योर बॉडी विल गो टू दैट हीलिंग मोड. उसके ऊपर जो है इमिडिएटली यू आर वर्किंग विद द एम1. तो इसलिए इट इज वर्किंग वेरी गुड.
तो इवन जब डायरेक्टली भी अगर किसी को हीलिंग करना चाहते हो, तब आप उनको जो है 10 to 1 या 6 to 1 पहले काउंट डाउन, ओके, काउंट डाउन करते वक्त बोल सकते हैं टेक डीप एंड स्लो, ओके, तो वो कर सकते हैं। और उसके बाद जब अगर आप ब्रीथिंग काउंट डाउन दिया किसी को, तब आप जो है जब पूरे के पूरा जो बॉन्डिंग करने के बाद जो है आप काउंट अप का भी कमांड देना है, मस्ट आप देना है, कभी भी रास्ते में छोड़ना नहीं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो लेकिन वो छोड़ना नहीं किसी को भी। अगर आप थीटा स्टेट पे आप वो मतलब काउंटिंग डाउन करके लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप काउंट अप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 to 6 करके 1, ठीक है, डीप ब्रीथ अप एंड अप, मतलब थोड़ा आवाज ऊंचा करके जो है, तो उनको भी लगेगा दे आर कमिंग बैक टू द एक्साइटमेंट मोड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई एक क्वेश्चन था मैम, राधिका जी, कोई क्वेश्चन? सर ये भी पूछना था कि एम वाटर को किस में पीना चाहिए ज्यादा बेटर रहेगा, और स्टोर करना हो तो किस उसमें हम स्टोर कर सकते हैं? ठीक है, नॉर्मली जो एनर्जाइज्ड वाटर में जो जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो मेन प्रॉपर्टी दो है। वो है एक अल्कलाइन, दूसरा हीलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक अल्कलाइन मतलब पीएच बैलेंसिंग, और दूसरा जो है हीलिंग फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली जो अल्कलाइन का जो अमाउंट जो होती है, वो अगर हीट अप करेगा तो कम हो जाएगा, या थोड़ा लॉन्ग पीरियड में आप रखेगा तो कम हो जाएगा, या मूवमेंट उसको कम करेगा, इवन लाइट एनर्जी उसको कम करेगा। तो इसलिए ज्यादा रखे फायदा नहीं। 2-3 दिन रख सकते हैं, अगर अच्छा एटमॉस्फियर है 2-3 दिन रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप बॉटल में डालेंगे तो नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल में मत डाला करें। आप ग्लास बॉटल में डालें, स्टील में भरो या कॉपर में भरो, मटका जो मट्टी का जो वो उसमें भर सकते हैं, ताकि उसका जो नेचुरल रेजोनेंस उधर ही रहता है, वो बिखर नहीं जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में नॉर्मली जो है, बिकॉज इट्स नॉट ऑर्गेनिक, सो उस पे मतलब अच्छा नहीं है। तो मेरा ख्याल में 2-3 दिन मैंने देखा है, इवन फिलीपींस में भी, इवन जो इंग्लिश मेडिकल स्टोर में वो लोग देते हैं एम वाटर को जो है ना, मतलब इवन नॉर्मल पानी को भी बॉन्डिंग करके भी देते हैं, नहीं तो एम वाटर भी बेचते हैं वो लोग। एंड दे आर सेलिंग ऑलमोस्ट 200 रुपीज पर बॉटल। एक बिस्लेरी का जो बॉटल आता है ना, ऐसा बॉटल 200 रुपीज में वो लोग बेचते हैं वहां पे, फिलीपींस पे। एंड दे ऑलवेज कीप इट फॉर लाइक 2 to 3 days, ज्यादा नहीं रखता। फ्रिज में रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब हीट एंड कोल्ड करते वक्त थोड़ा सा उसका जो जो पीएच प्रॉपर्टी, जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कम होने का चांसेस है, अदरवाइज एनर्जी लेवल विल बी ओके, ठीक है। फिर तो सबसे बेटर क्या कांच रहता है, या किसी ये जो आपने मेटल ग्लास, आई यूज्ड टू पुट इट इन ग्लास। और अगर आप इवन प्लास्टिक यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मल प्लास्टिक मत यूज करें। कुछ ऐसा प्लास्टिक है जो हाइजीन टाइप की होती है, उसको बीपीए प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, उस पे यूज करें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। फिर भी जो है ट्राई टू फिनिश इट इन 1 or 2 days, ज्यादा टाइम मत रखिए। तो अगर बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को जो कांच का जो बॉटल स्कूल नहीं लेके जा सकते, थोड़ा जो प्रिकॉशन होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है ना, बच्चों को अगर देंगे तो आप अच्छा क्वालिटी जो बीपीए प्लास्टिक वाला, अच्छा क्वालिटी बीपीए वाला जो, या इवन ग्लास बॉटल सही है, लेकिन उस पे थोड़ा कवरिंग होनी चाहिए, मतलब रबर जैसी कोई भी कवरिंग होनी चाहिए, ताकि वो मतलब गिर के टूटना या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर वो बॉटल का जो कलर है थोड़ा सा, मतलब वाइट कलर के जगह जो है ना, अगर आप पर्पल कलर रखिए, ताकि जो है ना सनलाइट उस पे डायरेक्ट नहीं गिरेगा, ताकि तो एनर्जी कायम रहेगा, जो एनर्जी आपने उसमें है, एनर्जी कायम रहेगा। वी प्रेफर द डिफरेंट कलर, ब्लू रख सकते हैं, या पर्पल कलर वाला अगर बॉटल, अच्छा क्वालिटी वाला बॉटल मिलते हैं, तो बच्चों को जो है पानी स्कूल भेज सकते हैं बच्चों को, ठीक थैंक है। यू सर। जी बहुत यू आर बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। Dr. Radnaji, can you hear me? और आई होप अवधि तौर पर होगा,
इंफरादी तो है, मेडिकल प्रॉब्लम है, वो सब जो है हम अटेंड करते हैं, ठीक है. Yes, I think that's all for tonight. And thank you so much for joining. May the energy be with you all. And see you next week, same time. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you.